Hello friends, how are you all? I am Kshipra Jadav and today we are going to learn the base theorem. So this video is going to be divided into three parts. The first, we will learn what is the product rule. In the second, we will learn the base theorem. And the third, we'll solve some examples based on base theorem. So let's get started. Part 1, the product rule. First, I will tell you the formal definition of product rule and then we will learn about it in our informal definition. So, what is the product rule? It states that the probability of an event A happening under the influence of the events B1, B2, B3 up to Bn is given by. समझ में नहीं आया ना? Don't worry, I'll make you understand. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए मतलब हम लोगों ने एक इवेंट ए लिया तो उसका प्रोबेबिलिटी कि वो होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इवेंट्स B1, B2, B3 अप टू Bn, मतलब वो जो इवेंट ए है वो होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है, दूसरे इवेंट्स जो कि है B1, B2, B3 अप टू Bn, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है कैसे. तो पूरा हिंदी में डेफिनेशन ऐसा हुआ कि एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड है इवेंट्स लाइक B1, B2, B3 उसके ऊपर इज गिवन बाय P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A गिवन B1 प्लस P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A गिवन B2 प्लस P ऑफ B3 into P of A given B3 plus up to P of P of A into P of A given Bn. ये भी फॉर्मूला समझ नहीं पड़ा ना, don't worry, we'll take a small sum and then we'll understand this concept thoroughly, trust me. Now this sum states that we have two bags, one has 4 red and 4 black balls in it, the other has 2 red and 6 black balls in it. Find the probability that it is red if one ball is drawn out at random from the bags. अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 बैग है, एक में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, दूसरे में 6 ब्लैक और 2 रेड बॉल्स है. हम लोगों ने हाथ डाल के रैंडमली कोई एक बॉल उठाया एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल निकलेगा. तो हमको यहाँ पे सम को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए. तो जो इवेंट ए था ना, दैट इज आवर मेन इवेंट. इवेंट ए हमारा आपको होगा कि बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब हम लोगों ने जो बॉल निकाला इज रेड. अब P ऑफ B1 एंड P ऑफ B2 मतलब वो रेड कब निकलेगा कि या तो हम लोगों ने बॉल फर्स्ट बैग में से निकाला होगा या तो हम लोगों ने सेकंड बैग में से निकाला होगा. सी के वो ए है वो रेड निकलेगा या नहीं निकलेगा, इट विल गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज इवेंट्स B1 एंड B2. सो आवर इवेंट्स B1 विल बी द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड इवेंट B2 विल बी द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग. नाउ वी हैव टू कंप्यूट सम थिंग्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना है कि हम लोग फर्स्ट बैग में से बॉल निकालेंगे तो हाफ हुआ, और सेम सेकंड बैग में से होगा क्योंकि रैंडम है और सिर्फ 2 बैग है तो 50-50% चांसेस आते हैं. एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 मतलब गिवन का मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि B1 इवेंट हो गया तो अब A1 A की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब हमको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से बॉल निकाला तो वो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो दैट वाज वी हैड 4 रेड एंड 4 ब्लैक, सो इट विल बी 4/8 बिकॉज 4 इज द रेड बॉल्स एंड 8 इज द टोटल बॉल्स. एंड विल डू द सेम इन द सेकंड बैग विच इज P ऑफ A गिवन B2. सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 2/8 क्योंकि उसमें 2 ही रेड बॉल थे और 6 ब्लैक बॉल थे एंड 2 + 6 is 8. हाँ. So now to compute this probability of event A happening, we'll go to my desk and we'll compute that. फटाफट. So let's go. Hello friends. So now we will discuss our question. तो हमारा क्वेश्चन क्या था
कि a ball was drawn at random from 2 bags. One bag had 4 red and 4 black balls. Second bag had 2 red and 6 black balls. Find the probability that the ball was red. मतलब हम लोगों ने एक बॉल निकाला 2 बैग में से, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक था, दूसरे में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल था. हमको ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी तो बॉल हमने जो निकाला वो रेड था. तो ये हम लोगों ने लिविंग रूम में डिस्कस कर लिया. अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो हमारे इवेंट ए होगा कि बॉल ड्रॉन वॉज रेड, मतलब दिस इज आवर मेन इवेंट. और इवेंट B1 वुड बी द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से बॉल निकाला. सेकंड B2 विल बी बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, मतलब हम लोगों ने सेकंड बैग में से बॉल निकाला. नाउ P of B1 will be 1/2 and P of B2 will also be 1/2. मतलब हम लोगों ने रैंडम चांसेस थे और सिर्फ 2 ही बैग्स थे, hence they both will be 1/2 1/2. P of A given B1 इसका मतलब फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि B1 A given B1 मतलब हमको पता है कि B1 हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब A होगा, तो विच इज़ 4/8. मतलब हमको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट बैग में से ही बॉल निकाला और फर्स्ट बैग में कितना 4 रेड 4 ब्लैक था, तो उसमें से 4/8. एंड B2 A गिवन B2 इज़ 2/8. मतलब हमको पता है कि हमने सेकंड बैग में से बॉल निकाला, तो बॉल रेड आने के चांसेस क्या, मतलब उसमें 2 राइट थे एंड 2 + 6 is 8, सो 2/8. Now P of A, the total probability of A is given by P of A given B1 into P of B1. मतलब this into this या फिर this into this plus this into this, मतलब P of B2 into P of A given B2, which is equal to 1/2 into 4/8 plus 1/2 into 2/8. So this 2 gets cancelled with 4. So 2 remains here and these both 2 gets cancelled, so it is 2/8 plus 1/8, which comes out to be 3/8. So our total probability that the ball was red is 3/8. Now I hope you understand this sum, and I know many of you are slow learners and there is no need of shame on that. You can rewind the video as many times as you like and review this sum as many times as you like. When you are done with it, just remember that I'll be waiting for you in part 2. Thank you. Welcome to part 2. Now we will learn what is the Bayes theorem. So let me tell you frankly, Bayes theorem is just the product rule on steroids, nothing else. I will give you the formula. P of Bi given A is equal to P of Bi into P of A given Bi divided by P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 plus up to P of AN into P of A given Bn. We have heard this before, right? Yes, it is the P of A in the denominator, and we just have to replace I by the number of terms. Suppose we have to find the probability of B4, so P of B4 given A is equal to P of B4 into P of A given B4 upon P of A1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 plus P of B3 into P of A given B3 plus P of B4 into A given B4. Done. We have got the answer. Now what does P of BI given A mean? Let me tell you. हम लोगों ने लास्ट सम में देखा था कि P of B1 given P of A given B1, मतलब हमको पता है कि B1 हो गया है, एंड नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि A1 होगा, A होगा. तो इसमें भी सेम ही है कि हमको पता है कि इवेंट A हो गया है, अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि P of B होगा. सो विल लर्न दिस बाय अ सम. ओके, सो लास्ट वाला सम याद है आपको कि 2 बैग थे, एक में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल थे, दूसरे में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल थे, एंड वी हैड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. ओके, नाउ इन Bayes theorem the whole question changes, and how it changes, let me tell you. So we have taken 2 bags. One bag has 4 red and 4 black balls. The second bag has 2 red and 6 black balls. A ball was taken out randomly from a bag and was found to be red. What is the probability that it was from the first bag? See, the whole question changes.
अब हमको ये तो दिया ही है कि तेरे को रेड मिल गया बॉल, हमको ये फाइंड करना है कि वो फर्स्ट बैग में से निकला था। तो हम लोग ऐसा कंप्यूट करेंगे इसको कि ये सब है ना 80% फुल हमको प्रोडक्ट थियरम ही है, सिर्फ लास्ट में हमको एक स्टेप बेस थियरम का ऐड करना है। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट सम में पी ऑफ ए तक तो कैलकुलेट किया था ही। ओके, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड दैट आवर B1 event was that it was drawn from the first bag and our A event was that the ball was red. So P of B1 given A, मतलब हमको पता है कि बॉल रेड है, तो वो फर्स्ट बैग में से आया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या, तो P of B1 given A is equal to P of B1 into P of A given B1 upon P of A1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2. चलो मेरे डेस्क पे चलते हैं, विल फाइंड आउट द आंसर टू दिस। ओके, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस थियरम क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉल वाज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग्स, 2 bags. One bag had 4 red and 4 black balls. Second bag had 2 red and 6 black balls. It was given that the ball drawn was red. Find the probability that it was from first bag. नाउ हम लोगों ने ये क्वेश्चन का मतलब तो फुल समझ लिया है फर्स्ट पार्ट में। सो नाउ हम लोगों ने P ऑफ A भी कैलकुलेट कर लिया था पार्ट 1 में, इफ़ यू रिमेंबर 3/8। नाउ द बेस थियरम स्टार्ट्स। सो P ऑफ BI गिवन A इज इक्वल टू P ऑफ BI इंटू P ऑफ A गिवन BI अपॉन P ऑफ A। P ऑफ A हमने यहाँ पे निकाला था। सो ये क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है कि द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. So we have to find that the ball, what is the probability that the ball was drawn from the first bag. So P of B1 given A is equal to P of B1 into P of A given B1 upon P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2. So if we put the values, we get P of B1 given A is equal to 1/2 into 4/8 upon 3/8. We got this 3/8 from PA which we found just now. Okay. So 1/2 into 4/8 upon 3/8, so that is 2/8, and if we take this to the numerator, it gets inverse, so which is 8/3. So the final answer comes out to be 2/3. So the probability that the ball was taken from the first bag is 2/3. Now I hope you all understood this question too, and if you want you can rewind this question as many times and review it as many times as you like. Thank you. Hello friends, welcome to part 3. I hope you have learned everything that we learned in part 1 and 2. Now in part 3 we are going to get started with 2 examples. So let's get started. So this example is a rather tricky one, but if you understand it, it is very simple. So in this example, it is given that a machine is correctly set up. If a machine is correctly set up, it produces 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Experiences show that 80% of the setups are correctly done. After a certain setup, a machine produces 2 acceptable items. Find the probability that the machine is correctly set up. अब फ्रेंड्स, अगर आप बेस थियरम जानते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ रेगुलर मैनर. हमको यहाँ पे ये 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स पे फोकस करना है बिकॉज नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी डबल्ड. कैसे? लेट्स सी. So our main event A is machine produces 2 acceptable items, B1 and B2, on which A is influenced is B1 is it was correctly set up and B2 is it was incorrectly set up. मतलब हमारा मेन इवेंट A है यहाँ पे कि मशीन ने 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस की. B1 इज मतलब वो करेक्टली सेटअप हुआ था, B2 इज वो इनकरेक्टली सेटअप हुआ था. Now probability of B1 मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो करेक्टली सेटअप हुआ था इज 80/100 एंड B2 कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इनकरेक्टली सेटअप हुआ था इज 20/100. अब नाउ हमको दिया है कि 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स उसने प्रोड्यूस किए तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी. मतलब A गिवन B1 मतलब हमको पता है कि उसने 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस किया
तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि उसने करेक्टली सेटअप किया था तब प्रोड्यूस किया था. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 which is 90%. 90% into 90%. And when what is the probability that that it produces two acceptable items when it was incorrectly set up, which is 40 by 100 into 40 by 100. Now according to Bayes theorem, our formula goes like P of B1 given A is P of B1 into P of A given B1 upon P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2. अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि मशीन वॉज करेक्टली सेटअप विच इज़ B1. सो वी हैव टू फाइंड P ऑफ B1 गिवन A. P ऑफ B1 क्या है 80 by 100. P ऑफ A गिवन B1 क्या है 90 by 100 इंटू 90 by 100. P ऑफ B1 वापस क्या है 80 by 100 इंटू 90 by 100 इंटू 90 by 100 प्लस P ऑफ B2 क्या है 20 by 100. P of A given B2 क्या है 40 by 100 into 40 by 100. So this is our raw form of the formula. Now we have just removed all the hundreds because it was common and we cancelled out. So we are left with 80 into 90 into 90 upon 80 into 90 into 90 plus 20 into 40 into 40. Now friends, you can also remove a 10 from this. You can also common and cancel a 10 from this, but then you'll have to multiply the the simplified equation in order to get the answer. So if you don't want to do that, just don't remove the 10. So now we are left with 648 by 680 which is 0.95. So this is the probability that it produced two acceptable items when it was correctly set up. So I know this was a tricky one, but we have learned the concept and I hope it is very easy for you guys to understand it now. So now we will move on to the second example. Hello friends, so in the second example, it is given that a factory has two machines, A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items. 2% of the items which were produced by A and 1% of the items which were produced by machine B were defective. One item is chosen at random and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? So friends, हमको इस एग्जांपल में ये दिया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीन है A और B. अब उसका टोटल काम जो है उसमें से A मशीन का काम 60% है, मतलब टोटल जितने भी वो आइटम बनाते हैं उसमें से 60% आइटम A बनाता है और 40% आइटम B बनाता है. अब ये जितनी भी आइटम बनाई उसमें से 2% ऑफ द आइटम्स जो A ने बनाई है वो डिफेक्टिव थी एंड 1% ऑफ द आइटम्स जो B ने बनाई है वो डिफेक्टिव थी. ये सब आइटम को मिला के हम लोगों ने एक आइटम निकाली एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो आइटम B मशीन ने बनाई थी. सो हमारा A इवेंट विच इज आवर मेन इवेंट इज item is defective. B1 and B2 which depend on A are item was produced by machine A and item was produced by machine B. Probability of B1 कि हमको पता नहीं है कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं, पर उतना पता है कि वो B1 ने बनाया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि 60 by 100. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मतलब हमको इतना ये नहीं पता कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं, इतना पता है कि वो मशीन B ने बनाया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या 40 by 100 जो हमको दिया है 40%. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 मतलब हमको अब पता चल गया कि आइटम A ने बनाया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि वो डिफेक्टिव है विच इज़ 2 by 100 जो 2% हमको यहाँ पे दिया है. एंड P ऑफ A गिवन B2 मतलब हमको इतना पता है कि वो मशीन B ने आइटम बनाई है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कि वो डिफेक्टिव है. इट इज़ गिवन बाय 1 by 100. नाउ अकॉर्डिंग टू बेस थियरम P of B2 given A is equal to P of B2 into P of A given B2 upon P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 is equal to 40 by 100 which is P of B1 40 by 100 which is P of B2, 1 by 100 which is P of A given B2 upon 60 by 100 which is P of B1 into 2 by 100 which is P of A given B1 plus 40 by 100 which is P of B2 and 1 by 100 which is P of A given B2. Now 100 is common and cancelled, so we are left with 40 upon 60 into 2 plus 40 into 1.
which is 40 upon 120 plus 40, which is 40 by 160, which ultimately comes out to be 1 by 4. So 1 by 4 is the probability that the item was defective and it was produced by machine B. So this was a rather easy example. I hope you all understood these both examples. If you did not understand any single of these examples, please rewind the video and please see them again so you can have a more clear idea about how these examples are solved. Thank you.